Good morning all. So today we are going to discuss about the types of images formed by concave or convex mirror. So starting with the concave mirror, as we have discussed in the previous lecture, that concave mirror is the mirror in which this exterior part will be polished and the reflection will take place from the इंटीरियर पार्ट, केव वाले पार्ट में से रिफ्लेक्शन होगा, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड हाउ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स द इमेज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज एंड व्हाट इज द nature of the image, that we are going to study. So before we discuss all the 6 cases, we will quickly recall the rules of image formation. Rule number 1 says that a ray parallel will always pass through focus. The second rule says that any ray of light passing through center of curvature will reflect back along the same path. And the third rule says that any ray of light passing through focus becomes parallel to the principal axis after reflection. So recalling all those rules and proceeding with the different situation, we are going to discuss the image formation by concave mirror, right? So before we discuss the actual cases, we are going to discuss the 6 cases. जो हम cases पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आगे, that we are going to discuss, right? So suppose there is a concave mirror. Now the object could be at infinity, object could be far off. In physics, infinity means a very large distance as compared to the focal length of this mirror. So the object could be at infinity, case number 1. Now bringing the object closer to the mirror. Case number 2, object is beyond C. C के आगे रखा है object, right? Case number 3, object at C. Case number 4, object between C and F. Case number 4, object at focus. Sorry, case number 5, object at focus. And the last case, object between focus and pole. There could be 6 possibilities in which the object can be kept. So those 6 possibilities are at infinity, beyond C, that is center of curvature, at C, between C and F, at F, that is focus, and between focus and pole. So these 6 possibilities we are going to discuss in our lecture, right? In all these 6 cases, we are going to mainly discuss about 3 things. And what are those 3 things? First of all, what is the position of the image? कहाँ पे बन रहा है image? What is the size of the image? Is it equal to the object? Is it bigger than the object? Or is it very small? Very small images are also termed as point-sized images in physics. Point-sized or highly diminished. These 2 terms are used for very small images, right? And finally, we are going to discuss the nature of the image. What kind of image will be formed? Whether it will be real image, it will be virtual image, it will be erect image, it will be inverted. As we discussed previously also, real images are always inverted. Virtual images are always erect. So there could be 2 possible nature of the image. One, either it could be real or inverted. Second, इट कुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो यही हमें अपने 6 केसेस में देखना है कि किस टाइप का इमेज हमारा बनने वाला है, राइट? सो स्टार्टिंग चिल्ड्रन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द इनफाइनाइट वाला केस. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. So from infinity, generally what we consider that a number of rays are coming and falling on the mirror, and from infinity we consider all these rays to be parallel to each other, mutually parallel to each other. So let us consider so many rays are coming and falling on the mirror. Whenever you are drawing the mirror, you have to consider 3 things you should label. First of all, pole, that is the midpoint of the mirror. Second is the focus, that is the midpoint of C and P. And third is the center of curvature. These 3 things we are by default we are supposed to show in the ray diagram. Secondly, ray diagram में incoming ray का arrow should be very clear. If you haven't drawn the arrow properly, then it is not clear that in which direction the light is coming. So incoming ray का arrow और reflection के बाद outgoing ray का arrow, both the arrows are very important, right? So ये सारी की सारी rays आ रही हैं, कहाँ से आ रही है सब rays? They are coming from infinity, right? So all these rays are parallel to each other.
they fall on the mirror. I have shown all the inverse arrows. We have learned rule number 1 that whenever the ray is parallel to the principal axis, it will pass through focus. Considering that point in our mind, all the rays are parallel to the principal axis. Because all the rays are parallel, they all will converge at a single point, and that single point is focus. Right? Parallel है तो कहां से पास होगी? फोकस से. रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3 सब कहां से जाएंगी? फोकस से जाएंगी. One particular ray will also pass through center of curvature. As according to rule, ये वाली रे इसी पाथ के along क्या हो जाएगी? It will be reflected back along the same path. So ये वाली रे ऐसे वापस चली जाएगी, बाकी सब रेज कहां जाके मिलेंगी? फोकस पे. तो ये जो सारी की सारी रेज मिल रही है, ये हमारी इमेज है. वेरी वेरी स्मॉल इमेज. सपोज आई हैव टेकन अ कॉन्केव मिरर and I am taking the picture of the building half a kilometer away from me. So that building may be 10, 12, 15 floors high. But उतनी बड़ी बिल्डिंग का इमेज मेरे कॉन्केव मिरर पे कैसा बनेगा? वेरी वेरी स्मॉल. सो दैट स्मॉल इमेज विल बी termed as point sized image or highly diminished image, right? So we'll discuss the result, position, size and nature of the image. So you can look here, what is the position of the image? कहां पे बना इमेज? Image is formed at focus. So we'll write that position of the image is at focus. Secondly, point size or highly diminished image. Size जब हम discuss करेंगे तो size is very very small. So we will name it as point size or highly diminished image. Next is nature. Nature is real and inverted. जो भी हम object यहाँ पे लेंगे तो वो सारी की सारी rays they are actually meeting, and what we have learned, the rays whenever they are actually meeting at a point, the image is termed as a real image. If all those images, if all the rays are virtually meeting or we are imagining that they are meeting at a point, हम जब imagine करें तो image कैसा होगा? Virtual. When they are actually meeting at a point, that time the image will be real. So all the rays are actually meeting at a point, so the image will be real, because real images are inverted also. So what is the nature of the image? Real and inverted. Size is point size or highly diminished, and it is formed at the focus. So this is our first case of image formation by a concave mirror, and we have 6 cases like this, right? Proceeding to the second case. Now अभी ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे. अभी ऑब्जेक्ट पास आ गया मिरर के. कितना पास आ गया? नाउ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. सो व्हाट विल बी द हेडिंग ऑफ द सेकंड केस? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया हमारा? सी के पास आ गया. राइट? नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट. वी ऑलवेज डिनोट, सी इन्फिनिटी से तो हमने बहुत सारी रेज ले ली, हमने ऑब्जेक्ट ए बी भी नहीं माना. लेकिन जब हम बात करें कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है प्रिंसिपल एक्सिस, देन वी हैव टू एज्यूम इट एज ए बी. जनरली वी एज्यूम एज ए बी. तो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया ए बी. अ रे पैरेलल एज पर द रूल शुड पास थ्रू फोकस. सो ये रे पैरेलल, एरो इस तरफ है और रिफ्लेक्शन के बाद एरो बाहर की तरफ है, तो ये कहां से पास होगा? इट विल पास थ्रू फोकस. सेकेंड रे विल पास थ्रू सी एंड सेकेंड रे विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, राइट? सो बोथ द रेज, ये फोकस से आने वाली रे और सी से जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, both the rays are meeting here. So here we draw the image A dash B dash, right? Now the image is formed between C and F. We will elaborate the result. How? Position is between C and F. Size is smaller than the object. You can see object is this much, image is smaller. So we will write that image is smaller than the object. And finally the two rays are actually meeting, actually intersecting. So hence the image formed will be real image, and real images are always inverted. So the nature will be real and inverted. This is your second case. I hope this is clear, children. Proceeding to the third case. Yes, case number 4. Now the object is at C. Now object जैसे जैसे मिरर के पास जा रहा है, object is at C. Right? Let us draw the concave mirror again. A principal axis. This point is focus. This pole. This point is focus, and this point is C. Object अभी कहाँ पे है? C पर है. Right? Let us write C here. यहाँ पे है object C. Right? This is object AB.
a ray parallel passes through the focus, right? A ray parallel to the principal axis passes through the focus. Now second ray, जनरली हमने पहले क्या दिखाया था कि सेकेंड रे सी से पास हो रहा है, लेकिन अभी सी पे ऑब्जेक्ट खुद रखा हुआ है, राइट? Now because the object is kept at C, we assume that second ray is going to pass through F. अभी सेकेंड रे कहां से पास हुई है? F से पास हुई. Because it is passing through F, it will become parallel as per the third rule. पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, फोकस से जा रही है तो इट विल बिकम पैरेलल. सो ये जो रे फोकस से आई ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी, राइट? एंड जस्ट अ मिनट, ड्रॉ इट प्रॉपरली. टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए वो. यस, बोथ द रेज आर मीटिंग हियर. सो फोकस से गई तो कहां से गई? पैरेलल होगी. नाउ दिस इज पैरेलल टू दिस. नाउ बोथ द रेज आर मीटिंग हियर. This is the image A dash B dash. Object was AB. A ray parallel will pass through focus. Yeah, we'll clearly show it. This is focus, right? Second ray, look at the arrowhead. Second ray कहां से जा रही है? फोकस से, और रिफ्लेक्ट होके कहां आ रही है? It is coming back. It becomes parallel after reflection. Both the rays are meeting here. So this is the position of the image. Let us recall again. Position is at सेंटर ऑफ कर्वेचर. साइज इज सेम साइज. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमें इमेज भी मिल रहा है यहाँ पे. एंड व्हाट इज द नेचर? दोनों रेज दे आर एक्चुअली मीटिंग हियर, सो द नेचर इज रियल एंड इनवर्टेड. इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर थर्ड केस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट. सी से आगे हटके अभी ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? सी और एफ के बीच में आ जाएगा. नाउ द ऑब्जेक्ट इज केस नंबर 4. Object is between C and F, right? सबसे पहले पोल, फिर फोकस और फिर C. Object is between C and F. A ray parallel, yes children, will pass through focus. Now this ray will pass through focus. ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जाएगा. Second ray will be passing through C. अभी थोड़ा सा मिरर का साइज इलैबोरेट करना पड़ेगा. सेकेंड रे विल बी समवेयर हियर. इट विल पास थ्रू C एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम गो बैक अलोंग द सेम पाथ. अभी ये वाला रे और ये वाला रे यहां पर जाकर मिलेंगे. A डैश B डैश. ऑब्जेक्ट वॉज A B, right? Because the object was denoted by AB, the image will be denoted by A dash B dash. Yes, what can you say about the image? जो रे C से गया वो C से ही वापस आ गया. जो रे पैरेलल था it passed through the focus. What we can say about C? Sorry, what we can say about image? Position. Where is this found? It is beyond C, beyond center of curvature. Size enlarged, क्योंकि image क्या हो गया है? इमेज अभी बड़ा हो गया है. ऑब्जेक्ट इज दिस मच, इमेज इज एनलार्ज्ड. एंड व्हाट इज द नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड, राइट? बिकॉज इट इज अ रियल इमेज, इट हैज टू बी इन्वर्टेड. नाउ इफ यू रिकॉल सेकेंड केस. सेकेंड केस में क्या था? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, लेकिन इमेज कहां बना था? सी और एफ के बीच में बना था. अभी ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ. इमेज कहां बन रहा है? बियॉन्ड सी बन रहा है. दे आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में होगा तो इमेज बियॉन्ड C बनेगा. जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C होगा तो इमेज C और F के बीच में बनेगा, राइट? प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट केस, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. केस नंबर 5. ऑब्जेक्ट इज एट now the object is at focus. Case number 5. Object at focus. अभी ऑब्जेक्ट को फाइनली हमने कहा लिया है? पास लाते 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 इट हैज कम टू द फोकस. अगेन वी विल शो पोल, वी विल शो फोकस, वी विल शो C. नाउ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट focus. We have to make AB here. AB. A ray parallel will pass through focus. Second ray will pass through C. इसको थोड़ा सा बड़ा बना देंगे. Yes, second ray A बीच में आएगा तो A को यहां लिख लेते हैं. Second ray will pass through
C. Yes. This ray will move and come back along the same path. Right? Come back along the same path. Now this is incident. Just a minute. It has to pass through the object also. You have to be very careful while drawing the diagram. A ray parallel will pass through focus, right? This is A, B. Second ray will pass through C, reflects back along the same path. It reflects back along the same path. Now if you look at both the rays, they are almost parallel. Now in maths what we study that parallel rays do not meet. But in physics there is an assumption, there is exception here. जो almost parallel rays होते हैं, मतलब इसमें 0 डिग्री नहीं है एंगल. The angle is very very small, 1 degree, 2 degree. तो ये रेज यहाँ पे तो हमें दिखाई नहीं देंगी कि ये मीट कर रही है नहीं. But we can assume that they will move on, move on, move on, and at a larger distance they will meet. So larger distance को as I told you physics में क्या बोलते हैं? Infinity, right? Very large distance का मतलब infinity in physics. So they are almost parallel, and what we assume that they are going to meet at infinity, but they will meet because ये दोनों rays reflection के बाद आ रही है. So they will actually meet. Hence the image will be real and inverted. यहाँ मिलके आगे 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 तो बहुत बड़ा हमें यहाँ पे इमेज मिलने वाला है. Position is at infinity. Image will be formed at infinity. Size will be highly enlarged. Highly enlarged. अब तुम imagine करो ये दोनों rays मिलाते 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 you have to go beyond a greater distance below the principal axis. So it will be highly enlarged. And nature will be real and inverted. इसमें हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर रहे हैं. बस ये है कि ये रेस बहुत आगे जाके मिलेंगी जो कि हम ऑन पेपर नहीं दिखा सकते कि कहां पे जाके मिलेंगी. सो व्हाट वी से दैट दे विल मीट एट इंफिनिटी. ओके. फाइनली केस नंबर 6. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन focus and pole. Now the object is between focus and pole. Again we'll draw a concave mirror. First of all pole, second is focus, then it is center of curvature. Now the object is very very close to the pole. बहुत पास है पोल के. एक रे पैरेलल जाएगी, कहां से होकर जाएगी? We know very well. It will pass through the focus. A ray parallel, एरो दिखाएंगे प्रॉपर, इट विल पास थ्रू फोकस. सेकेंड रे विल पास थ्रू सी. इट विल रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग द सेम पाथ. अभी ये रेज देखो, ये ऑलमोस्ट पैरेलल थी, लेकिन ये रेज क्या हो गई? डाइवर्जिंग हो गई. कैन यू सी दिस? द रेज आर डाइवर्जिंग. यहाँ पे इतनी डाइवर्ज थी, यहाँ पे थोड़ा और डाइवर्ज हुई, और आगे जाते जाते ये क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज ही हो जाएंगी. अभी जब ये रेज डाइवर्ज हो रही हैं, आगे जाके मिलने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, राइट? द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस. बिकॉज द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस, सो व्हाट वी विल डू? वी एज्यूम दैट दे विल बी मीटिंग behind. And that is how this will be our image. Let us say it is A dash and B dash. Right? So what is the position? Position of the mirror is behind the, position of the image is behind the mirror. Size is enlarged, not highly enlarged but enlarged. And what is the nature? Virtual and erect. This is the nature of the image, right? So all the 6 cases we have discussed. In this case, because they are diverging, we have to assume that they will be meeting behind the mirror. When they will be meeting behind the mirror, so what we say? We say that the image is behind the mirror, it is enlarged and virtual and erect. Because we are assuming they are not actually meeting. We are assuming that they will meet because आगे जाके diverge हो रही है, तो कोई ना कोई initial point we have to consider. I hope all 6 cases are clear to you. All these cases are important for 3 marks in board. Thank you so much, children.